बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस क्या होता है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस किसे कहते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस NIC help to pay for some state benefits, including retirement pensions. NIC can also earn you the right to receive certain benefits. इसमें कहते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस, जिसको NIC भी कहते हैं, कि ये स्टेट के लिए कुछ बेनिफिट्स पे करती है। ठीक है, इसमें रिटायरमेंट और पेंशन वगैरह इंक्लूड होती हैं। NIC आल्सो हैव अर्न टू राइट टू रिसीव सर्टन बेनिफिट्स। इसको सर्टन बेनिफिट्स हासिल करने के लिए भी किया जाता है। वी एक्सप्लेन हाउ NIC वर्क्स एंड हाउ टू वर्क आउट व्हाट यू विल पे। इसमें बताया गया है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से NIC में वर्क किया जा सकता है और किस तरह से इसको पे किया जा सकता है। इफ़ यू वांट इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू गेट इंफॉर्मेशन नेशनल इंश्योरेंस नंबर और व्हाट to do if you have lost or forgotten your NINO, visit our national insurance number page। तो इसके बाद हमें ये बताया गया है कि किस तरह से विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू आई हैव टू पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस। क्या हम नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे कर सकते हैं। यू पे NIC इफ़ यू आर। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि आप पे कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर आइदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, या आप एम्प्लॉयड हों या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हों, एंड एज ऑफ 16 और अवर बट बिलो स्टेट पेंशन एज। ठीक है, पेंशन एज से कम हो। द अमाउंट ऑफ NIC यू पे डिपेंड ऑन हाउ मच यू अर्न। अमाउंट ऑफ NIC जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितना अर्न करते हैं मंथली। फॉर 2023-2022 tax year, certain rates of the national insurance have increased temporarily by 1.25 percentage points. From 6 April 2023, the rates will revert to their normal levels, and a new health and social care levy will be introduced. The levy is payable on earnings which are subject to NIC, to which would be subject to NIC if you were below state pension age. This means that those over state pension age will be liable to the levy if they are earnings from employment to self-employment. The way in which you work will affect the type of NIC you pay. Employees and other workers, for example, people working for agencies, pay different types of the NIC to the self-employed, that is, those who work for themselves. You stop paying NIC when you reach state pension age. जब आप स्टेट पेंशन एज को पहुँचे तो उसको NIC पेइंग को आप स्टॉप कर सकते हैं। इवन इफ़ यू कंटिन्यू टू वर्क, यहाँ तक कि अगर आप पेंशन एज के बाद भी वर्क करना चाहें तब भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। मीन स्टॉप करना लाजम होता है। द एक्सेप्शन इन क्लास 4 NIC फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड which pay for the whole tax year in which you reach state pension age. You pay NIC on earnings, income from work, that is employment income and profit from self-employment. You don't pay NIC on pension income. You can find out when you will reach state pension age by being the calculator on government.uk. यहाँ पे एक है स्टूडेंट्स के हवाले से क्वेश्चन है, आई एम ए स्टूडेंट, डू आई हैव टू पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस। क्या मैं यहाँ पे बताया गया है, पूछा गया है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में पे कर सकता हूँ। देयर इज़ नो स्पेशल रूल्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं है। इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू विल पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस ऑन द सेम बेसिस एज other workers in UK. If you need to get a national insurance number or you have misled yours, you can get advice on our page. How do I get national insurance number?
ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास नंबर है देन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो आप उस पर वेबसाइट पे जाएं और यहाँ वहाँ पे ये सर्च करें तो आपका कांटेक्ट मिल जाएगा। समटाइम्स माइग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में फाइंड दैट a national insurance number is included on the reverse of their biometric residence permit. Next question है, what are the national insurance credits? National insurance credits क्या है? In certain circumstances, you may be given international insurance credits even though you are not working. These counts towards some but not all entitlements. The main benefits they count towards if the is the state pension. You must be aged 16 or over the below state pension age for the year in which you may be credited. There are many different circumstances in which you might be eligible to receive national insurance credits, including being unable to work due to illness or caring for someone. Then there are two types of the national insurance credits, class 1 credit and class 3 credits. The type of the credits you might get depends on your individual circumstances. You have to meet certain conditions to receive national insurance credits. In some circumstances, you should be given national insurance credits automatically. For example, if you get employment and sport allowance or carers allowance. In other circumstances, you have to make a claim. From 6th April 2022, if you are self employed, then in certain circumstances, you can be treated as having made class 2 contributions if you don't earn enough to be required to pay them. These are different from national insurance credits. You may need to complete a self assessment tax return in order to demonstrate entitlement to those deemed contribution. There is more information on the different situations in which you might be able to get national insurance credits and how to get national insurance credits from on government.uk. Then a further page views information on the specified adult child care credits, sometimes though of as babysitting or grandparents credit. नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट बेनिफिट्स डू माई कंट्रीब्यूशंस पे फॉर। ठीक है, मेरी जो कंट्रीब्यूशंस है उसके बदले में क्या बेनिफिट मिल सकता है। टू क्वालिफाई फॉर सम यूके state benefits, you need to have paid or been credited with a certain amount or type of the NIC. These state benefits are called contributory benefits because they depend on your NIC contributions. In some cases, national insurance credits will count towards these contributory benefits, but in other cases, they will not. You should check carefully the eligibility requirements on government.uk. Many benefits depend on sufficient NIC being paid or credited to create a qualifying year. There are other benefits for which, provided the rules for claiming apply to you, it doesn't matter whether or not you have paid any or enough NIC. Benefits which don't depend on NIC include, ये NIC इंक्लूड में NIC में जो बेनिफिट्स नहीं इंक्लूड वो कौन कौन से हैं, अटेंडेंस अलाउंस एंड डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट, चाइल्ड बेनिफिट, गार्डियंस अलाउंस, income related payment and sport allowance, income based job seekers allowance, industrial injuries benefits, carers allowance, severe disablement allowance, statutory payments, for example, statutory sick pay, working tax credit and child tax credit, war widows or widowers pension credit, universal credit. Use of this table to see which type of the contribution counts towards the which benefit. तो हम ये इस टेबल से थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की हमारे पास कंट्रीब्यूशन हैं और किस टाइप के ऊपर वो
बेनिफिट उस पर मिल सकता है। नंबर 1 बेनिफिट है हमारे पास मेटर्निटी अलाउंस, इस पर मिल सकता है क्लास 1, 2 और 3 में। 1 और 2 में मिलेगा और 3 में नहीं मिलता। कंट्रीब्यूशन बेस्ड जॉब सीकर्स अलाउंस, ये हमें मिलता है क्लास 1 में और क्लास 2 और 3 में नहीं मिलेगा। कंट्रीब्यूशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस, ये हमें क्लास 1, 2 में मिल सकता है और क्लास 3 में नॉट प्रोवाइडेड। देन है विडोड पेरेंट्स अलाउंस, ठीक है, नॉट अवेलेबल वेयर स्पाउस और सिविल पार्टनर डाइड बिफोर 6 अप्रैल 2017। इसमें हमें जो है तो क्लास 1 में भी ये अलाउंस मिल सकता है, 2 में भी और 3 में भी, तीनों क्लासेस में ये अलाउंस हमें मिल सकता है। बेसिक स्टेट पेंशन, ये भी क्लास 1, 2 और 3 तीनों में अवेलेबल है। न्यू फ्लैट रेट स्टेटमेंट स्टेट पेंशन, ये भी क्लास 1, 2, 3 ये तीनों क्लासेस में अवेलेबल है। यहाँ पे नेक्स्ट है बेयरमेंट बेनिफिट्स एक्सेप्ट बेयरमेंट सपोर्ट पेमेंट, ये भी क्लास 1, 2, 3 तीनों में अवेलेबल है। बेयरमेंट सपोर्ट पेमेंट ये 1 और 2 में अवेलेबल है और 3 में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है नोट देयर आर एक्सेप्शंस टू द अबव फॉर शेयर फिशरमैन एंड वॉलंटियर डेवलपमेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड अब्रॉड। Class 4 national insurance contributions do not count towards any state benefits. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस। यू पे क्लास 1 NIC if you work for an employer, that is you are an employee, your employer takes the NIC off your wages before paying you. From employer also have to pay NIC on your earning, but you need not worry about this. There are detailed information about class 1 NIC in the employment section. What are the class 2 national insurance contributions? You pay class 2 NIC if you are self-employed and your profits exceed a certain level. Class 2 NIC can count towards entitlement to certain contributory state benefits as explained above. On 23rd March 2022, the government announced that the profits threshold for paying Class 2 NIC would be increased so that is aligned with the profits threshold for paying Class 4 NIC. The 2022-2023 tax year is a transitional year, and from 6th April 2023 both threshold will be aligned with the personal allowance for income tax. Those who would no longer be liable to pay class 2 NIC as a result of the announcement will be treated and having made class 2 contribution without having to pay them. Detailed information on class 2 NIC can be found on our self-employment sections. हम देखते हैं class 2 NIC can also be paid by those who are employed or self-employed overseas in certain circumstances. For more information please see our migrants section. Next हमारे पास क्वेश्चन आता है what are class 3 national insurance contributions. Class 3 national insurance contributions क्या होती हैं? If you don't pay either class 1 NIC or class 2 NIC, you don't receive national insurance credits, but you want to protect your rights to some state benefits. You can pay class 3 NIC. They are also known as voluntary contributions. For 2022 and 2023, the rates of class 3 NIC is 15.85 pound a week. You can pay class 3 NIC for the current year by monthly direct credit or by quarterly payment request. You can pay contributions for previous years in lump sum. There are more information on class 3 NIC and how to pay on government.uk. Next हम डिस्कस करते हैं what are class 4 national insurance contributions. You pay class 4 NIC if you are self-employed. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्लास 4 आप कर सकते हैं. यू पे देम इन एडिशन टू क्लास 2 NIC, बट क्लास 4 NIC don't count towards any state benefits. There are detailed information on our self-employment section.
You pay class 4 NIC together with any income tax payable, दो सेल्फ असेसमेंट. यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक सेशन में क्वेश्चन आया है, हाउ डू आई पे नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस. नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस किस तरह से पे आउट हो सकती हैं. इसमें हम क्लासेस के हिसाब से देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 1 NIC को किस तरह से पे कर सकते हैं. यू पे class 1 NIC though your earnings under the pay system. Your employer deducts class 1 NIC from your gross wages before deductions, together with any income tax due, and pays you the net amount after deductions. अब देखते हैं क्लास 2 में, हाउ डू आई पे क्लास 2 NIC. You can pay class 2 NIC together with the income tax due to your self-employment benefits, though self-assessment. Alternatively, you can make payment regularly throughout the tax year using a budget payment plan. Next हमारे पास, how do I pay class 3 NIC. क्लास 3 NIC को किस तरह से पे कर सकते हैं. You can pay NIC class 3 for the current year by quarterly bill or by monthly direct debit. You can also pay class 3 NIC for previous year by making a lump sum payment. There is more information on the methods of payment on government.uk. How do I pay class 4 NIC? You pay class 4 NIC together with the income tax due to your self-employment profits through self-assessment. To find out more, see how do I pay tax on self-employment incomes. How do I claim a refund of overpaid or incorrectly paid national insurance contributions? There is a limit to the amount of NIC you need to pay in a tax year across different classes of contributions. If you have had only one employment, you should not have overpaid NIC. However, if your total earned income is more than weekly upper earning limits multiplied by the 53, then it is possible that you may have a overpaid NIC. HMRC don't reconcile each individual's NIC. This is because it is relatively uncommon for an individual to have paid the wrong amount of NIC. You might find out have overpaid NIC in certain circumstances. For example, you carried on working after state pension age and your employer continued to deduct class 1 NIC. You paid class 4 NIC on profits from self-employment in respect of a tax year after the one in which you reached state pension age. You had 2 or more employments on which you paid class 1 NIC. You are employed and self-employed at the same time and paid class 1, class 2 and class 4 NIC. If you overpay NIC or pay NIC incorrectly, you can claim a refund. You cannot claim a refund of NIC simply because you stop work or don't work for the whole tax year. You don't claim a refund of NIC simply because you are leaving the UK to live in another country. For more information, visit the Migrants section. There is a tool to help you apply for the refund of NIC on government.uk. How do I check my national insurance contributions record? Revenue and Customs HMRC keep a record of NIC individuals pay. It is possible to check your NIC record by logging into your personal tax account, applying online using the form on government.uk, phoning HMRC's National Insurance Inquiring Helpline. You can find the details on government.uk. Writing to HMRC, you can find an address on government.uk. तो फ्रेंड्स, इसमें हमने डिस्कस किया कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं. तो ये कुछ मेथड्स थे, 4 मेथड्स थे जिसके ज़रिए हमें बताया गया कि हम अपने जो इंश्योरेंस का हमने कंट्रीब्यूशन की है उसको चेक कर सकते हैं. तो इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया
कि हमारे ये जो करियर्स हैं, ये क्लास 1 2 3 4 हैं, उनमें अगर इनकरेक्टली हमने कुछ चीज़ पे मतलब हमने उसको कर दिया है, उसको हमने किसी तरह से भी कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है, तो उसको हम किस तरह उसको करेक्ट कर सकते हैं और क्लेम कब कब कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।